Hello, mic testing. 1, 2. Hello. Hope everyone can hear us. Yes, you're audible, sir, but nothing is visible. Screen is black. Hold on. Now it is visible. Right. कैमरा ब्लैक पे था। अच्छा आप आओ ना मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे क्या वो? Okay, now is the video clear? Yes, sir. The video is clear. Thank you. हेलो रवि, मेरे को ना फटाफट है ना वो आज का ना वो मनीष जी ने ना मीटिंग का लिंक उसमें सपोर्ट पे भेजा हुआ है, ठीक है? मनीष जी की तीसरा चौथा मेल है उसमें से ना पूरा। बस वो लिंक मेरे को कॉपी करके जरा मीटिंग का मेरे को व्हाट्सएप करियो जल्दी। मैडम को भी ज्वाइन करवा रहा हूँ मोबाइल से, उनका कैमरा माइक आंटी तो जरा टेबल लगवा दो वहाँ पे एक नीचे से उठवा के। आपको फोन है क्या टेकर का? लड़के भेज
Now you can talk. Good morning, respected delegates. Honorable Union Minister will arrive soon. We request all of you to take your seat. You are also requested to keep your cell phones in silent mode during the program. Thank you. ट्यूब से जैसे कॉपी करके भी क्वेश्चन भेजा है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एग्रीगेटिव वेटिंग फॉर द इवेंट, ये ऐसे आएगा नाम के साथ में, नाम पहले होगा, ठीक ठीक है, ठीक, और उसके बाद उनका वो होगा।
महानिदेशक महोदय साहब की उपस्थिति हो चुकी है। कृपया आप सभी लोग अपनी जगह को आरक्षित कर लें। सारे काम के फ्लैट मूव करने के लिए वो चाहिए पॉइंटर। वहाँ पे चलते हैं। नहीं सर, यहीं से हम लोग कर देंगे, 3 ही स्लाइड्स है। मैडम नया चीज ऐड करी है आपने। क्या ये जो हम करेंगे करेंगे पॉइंटर सनी कर हम नहीं आप करेंगे। 3 वर्जन है उसके लिए लोग वो माइक नीचे के लिए चले नहीं पड़े अभी तक तो दे ही दो रख लेते सर। यहाँ तो माइक की जरूरत हुआ है सर, यहाँ तो अभी माइक की जरूरत हुआ है। अच्छा सेक्शन बात नहीं तो नहीं दे सकते हम कराएंगे हम लोग पीछे ही वेट करें क्वेश्चंस वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है बाकी लोगों को अभी नहीं है तो भी सब कर रहे, नहीं तो कर रहे। गुड मॉर्निंग रहेगा, नमस्कार से शुरू करते हैं। ठीक है। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो ठीक है। यहाँ रखेंगे तो यहाँ का सेटअप नहीं आप देख होगा। कुलदीप जी ये कुछ कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं?
वो माइक रखने के लिए बोले। सभी लोग बोलेंगे। एक मिनट, वहाँ क्यों नहीं आ रहा उनको एक्सेस? सर वहाँ पर एक्सेस नहीं है, आपको यहीं पे माइक रखना पड़ेगा। यहाँ कहाँ रखेंगे फिर वो? फिर तो एवरीबॉडी विल कीप हियर। जगह बनानी पड़ेगी। स्पीकर मिल जाता तो स्पीकर तो घर पीछे लगा लेते। स्पीकर से स्पीकर लगाना ऐसे तो लगाते थे। यहीं पे रख दीजिए, या जो छोटे वाले माइक है उसमें आप इसको हटा दीजिए, इसको ऐसे ही रख दीजिए माइक के नीचे। और भी माइक्स आएंगे ना, आप अकेले नहीं है ना, काफी सारे लोग हैं ना, तो फिर सब लोग यही रखा देंगे। लेकिन सभी के लिए कंफर्टेबल। क्या हाँ, इधर से भी देख।
Let us welcome the chief guest, the Honorable Union Minister of Earth Sciences, Shri Kiran Rijiju ji. Good morning and namaskar to all of you. I am Monica Sharma. नमस्कार, मैं असीम कुमार मित्रा, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। मैं मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF, भारत मौसम विज्ञान विभाग के सभी सहयोगियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं MOES के विभिन्न घटकों, मीडिया समूहों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी ऑनलाइन प्रतिभागियों, एजेंसियों और आम जनता का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए। साथ ही साथ डॉक्टर S पांड्यन जी, संयुक्त सचिव MOES, और श्रीमती रंजू मदान, वैज्ञानिक जी, और साथ में विवेक सिन्हा जी, साइंटिस्ट जी भी मंच पे आने की कृपा करें। Thank you. Respected delegates, IMD will enter into its 150 years of establishment on 15th January 2024. To commemorate this event, a series of activities are planned to be conducted over a period of 1 year, commencing from 15th January 2024 to 15th January 2025. A logo is an emblem to promote public identification and public recognition. It symbolizes brand identity of an organization. We have gathered here today to start the celebrations of 150 years of IMD with release of logo based on public suggestions to commemorate the celebration of 150 years of foundation of IMD. I take this opportunity to request DG IMD to welcome the Honorable Union Minister of Earth Sciences with bouquet of flowers. Thank you, sir. I now request DG IMD to welcome the Honorable Secretary, Ministry of Earth Sciences with bouquet of flowers. Thank you, sir. I now request Mrs. Ranju Madan, Scientist G and DDG Administration, to welcome Dr. S. Pandian, JS MOES, with a bouquet of flowers. Thank you, madam. IMD has relentlessly served the nation since 1875. It's a proud moment for each of us to acknowledge the 150 years of foundation of IMD in 2025. I now take this opportunity to invite Dr. Mrityunjay Mohapatra, Honorable Director General of Meteorology IMD, for delivering the welcome address. Namaskar, good morning and good afternoon to all of you. Honorable Minister of Earth Sciences, Shri Kiran Rijiju ji, the chief guest of today, respected Secretary Minister of Earth Sciences, Dr. M. Ravichandran ji, Dr. S. Pandian, Joint Secretary Minister of Earth Sciences, Mrs. Ranju Madan, Scientist G, IMD, and Mr. Vivek Sinha, Scientist G, IMD. Distinguished friends and colleagues from press and electronic media, my dear friends from the Ministry of Earth Sciences, various constituents of the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department, NCMRWF, and many others, distinguished participants from various central
and state agencies in the offline and online mode. Former DGIMD, Dr. Ajit Tyagi, distinguished members of the National Organizing Committee, local organizing committee for celebration of 150 years of India Meteorological Department. Ladies and gentlemen, at the outset, I extend a warm welcome to Honorable Minister of Earth Sciences, Sri Kiren Rijiju, for his encouragement, inspirations, and guidance throughout the service being provided by India Meteorological Department. It is his leadership which has led to the significant improvement in the services being provided by IMD and MOES. With his leadership, we are going to celebrate the 150 years of existence of India Meteorological Department. As all of us know, India Meteorological Department came into existence on 15th January 1875. There is also little history behind that. All these things happened in 1857 when the entire country was fighting in the name of Sipahi Mutiny. A group of scientists in Asiatic Society of Bengal proposed to the Governor General that we should have a meteorological committee. But however, the Governor General and its council did not succumb to the proposal. And being anguished, again, Asiatic Society of Bengal requested in 1860 to come up with a meteorological committee. However, at that time, people were dying because of, especially, the air and waterborne diseases like cholera, malaria, etc. So therefore, then finally they thought that it should go to sanitation committee. And the proposal was sent to sanitation committee to examine whether any committee is required for this purpose. Then finally, sanitation committee told that it is not in our purview, and as proposed, there should be a meteorological committee. So by that time, action was not being taken. Then in 1862, again, Asiatic Society of Bengal wrote that if you do not take action, people will die again due to the cyclones rising in the Bay of Bengal. And their forecast went right. In 1864, 80,000 people died in Kolkata because of a massive cyclone affecting the area. 40,000 people died in Andhra Pradesh because of another cyclone. There was pulse point cyclone for Odisha. So all these things compelled the then British government to start with some kind of meteorological committee, and immediately started the port warning in 1865 for Kolkata port, which was extended to other ports. So by that way, actually, they did not go for a national meteorological committee. They suggested that, okay, there'll be a provincial committee. There are 5 provinces like Mumbai, Chennai, Kolkata, Sindh province, Central province, etc. in undivided India at that time, including India, Pakistan, Bangladesh, and Myanmar. So finally, actually, the decision was taken that yes, it is required to have the standardized information. You should have the exchange of information. You should have utilization of information collected by the meteorological observatories for the benefit of the people, for the benefit of managing the disasters. And finally, the world saw the emergence or the birth of the India Meteorological Department in 15 January 1875. So with this background, the logo came up at that time. I'll just go a little history, how many logos we have witnessed since 1875. So this is the logo which was taken off in British era, that is before independence. You can see that this logo was mainly based on the monsoon circulations. As all of us know that 70 to 90% rainfall in the country is achieved during southwest monsoon season. Therefore, that was the basic objective, therefore, that we should have very good monitoring of monsoon, and as I told earlier, the cyclones. These are 2 events which led to the development of India Meteorological Department. I forgot to tell that 1866-67, there was continuous drought leading to droughts and famines in the country, especially Eastern India, Bangladesh at that time, and Myanmar. So all these events led to 1875. So this was the logo at that time. Next, please. So after that, when India became independent, the logo was changed and it became, this was the logo taken off in 1947.
So again, it continued with the same southwest monsoon representation over the country, but it was changed with respect to the Ashok pillar and other things. And finally, just go next page. Around 1960s, we have the latest logo, which is continuing in the country. So this logo is embedded with the word Aditya Jayate Vrishti, which symbolizes the ancient knowledge which we had in the country with respect to weather and climate monitoring. The Aditya Jayate Vrishti means sun creates rain. It is taken from Vyad Sangita, 1880. And we continued with the same symbolic representation of the monsoon through circulation in the country. Ashok pillar also continued. But another word was joined, that is the Satyameva Jayate, that is truth only triumphs. So that is also embedded in the logo of India Meteorology Department. That again shows that it was in line with the national vision and mission of the country. So with this background, I will stop here. The present logo is being taken off after a public suggestions. So for this purpose, we took the help of the MyGov portal of India, and there we asked the general public to give the suggestions about the logo which should be taken off to commemorate 150 years of celebration of the existence of India Meteorological Department. We got around more than 1,000 entries, and all these entries were examined by an expert committee. And based on the expert committee's recommendations, it was taken off to the level of the secretary and then honorable minister. And we are very much fortunate that honorable minister gave his creative idea. And finally, we came up with the logo which will be unveiled by the honorable minister in today's program. So with this, I welcome our honorable secretary, Minister of Earth Sciences, Dr. M. Ravichandran, and Dr. Pandian, and all the media representatives and experts, the scientists, ladies and gentlemen participating in this event, online and offline. Thank you very much. Thank you, sir. We thank you very much for sharing with us the story of IMD logo since pre-independence era. We also thank you for your inspirational words. Through your mission and vision, IMD has earned accolades worldwide and contributed significantly to disaster management and thus overall improvement in socio-economic growth. We also thank you for your relentless support in bringing a paradigm shift in weather forecasting services of IMD and thus making life safer against all meteorological hazards. Thank you, sir. अब मैं इस अवसर पर विशेष संबोधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माननीय सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। Respected Honorable Union Minister for Earth Sciences, Sri Kiren Rijiju, Dr. Mahapatra, Sri Senthil Pandian, Dr. Ranju Madan, Dr. Vivek Sinha, my colleagues and friends, those who are present here, as well as in the online. Very good afternoon to all of you. It is great pleasure to be here in this part of this logo of IMD's 150-year celebration logo. It is an important milestone for IMD as well as the Ministry of Earth Sciences. I think Dr. Mahapatra already mentioned about the importance of the logo, how it has evolved over the period for different decades and centuries. I think it is very important. So the only one thing I want to convey is maybe not from January 15, 2024, from now onwards, we need to start outreach program and awareness program. Because people are thinking that every things, whatever happening in meteorological, IMD is able to forecast. I think we have come a long way. We are able to forecast. Maybe initially we started with the very lowest resolution model. Now it has very high resolution model with a lot of observations. We have improved quite significantly, but at the same time, we are still understanding many of the process to forecast in some of the minute details of whatever happening in the atmosphere. So it is our endeavor. Maybe we have to communicate to the common society as well as people around us that what is possible by
forecasting what is not possible in the science, what is available. So we cannot say that today you give an earthquake forecast. No, we don't have science. Similarly, maybe if you want to see forecast in lightning, just 1 week before you give a lightning forecast, it is not possible. So we need to communicate, because people expectation may be too much, but we have to communicate. It is our important motivation that we have to communicate to the people what is possible from meteorological forecast and other things. I think this 1 year we will work towards to communicating what is possible with us and what is not possible. Maybe we are trying to improve, maybe in a 1 year time frame or 1 decade time frame. What is that we can achieve? That also we can communicate. And I once again thank you all coming here, and especially our Honorable Minister for taking his time to come here for this logo release. Thank you very much. Thank you all. धन्यवाद सर। हम एक मजबूत मौसम भविष्यवाणी प्रणाली की स्थापना और इस उद्देश्य के लिए एक नए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए आईएमडी को आपके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आपके आभारी हैं। आपके नेतृत्व में आईएमडी चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मैं इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को 1875 में आईएमडी की स्थापना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों का अनावरण करने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया ताली से, गड़गड़ाहट से पूरे मंच को स्वागत कीजिए। The India Meteorological Department, IMD, was established in 1875 as one of the first scientific departments of the Government of
rightly pointed out some of the critical achievements and how the logo evolved, taking into account its progress and the services it provided not only to the country of our nation, but the other members of the subcontinent and also to the global community. You know, when we talk about science, it's applicable to everyone. Science is for humanity. And when we talk about climate and weather, it is not confined to geographical boundaries of a country, but it has a continuity and it is a contiguous to all the relevant and related regions. I also realized that the shifting pattern of the climate also has changed the human behavior. If we have seen some of the situations of various locations few hundred years back or 1,000 years back, we realized that the climatic conditions and the weather situations were different. As when I went to West Asia few years back, then I realized that the so-called desert region was a dense forest region 2,000 years back. It has become a desert region today. So in a similar way, in our own naked eyes, in our childhood days, whatever we used to see water deficient regions are receiving adequate rainfalls, and those regions which are known as water surplus region are facing drought. So in 2005, when I was 2014, I was MOS home, I was surprised that the Chief Minister of Rajasthan came to Delhi to seek the government support for flood. They had a huge flood in Rajasthan. And the Chief Minister of Assam, which normally reels under the floods and rain, he came for the help for drought. So this kind of change we are witnessing. So the IMD's role is going to be more critical in the days to come. We are going to listen to many more issues and challenges in the days to come with regards to climate and weather pattern. So our young scientists and researchers who are working with IMD and our various other institutes dealing with the climate studies, you all are going to have tremendous studies, very interesting, challenging studies in the days to come. As our Secretary Ravichandranji was mentioning, that there are many fields where we don't have available science right now, but we can very well contemplate in the days to come. We are going to have detailed informations and studies about the sciences with regards to climate and weather. I also feel that India will take a big lead role in many of the studies in the days to come. I have visited some of the centers and I realized that our success rate is tremendous. But there are certain fields where we really need to strike harder. When Honorable Prime Minister said that we have to become Atmanirbhar by 2047 completely, thereby making India a fully developed nation, which means that in the field of science, we are going to play very critical roles. So, in our ministry, we are working out, all our centers are planning the 25 years vision document. We already have short vision document what we are going to do in next 2 years, 3 years time. But in next 25 years time, we have set out certain objectives which are going to be achieved.
I am very proud that all our centers under the Ministry of Earth Sciences have prepared vision document for 25 years, which is to go along with the objective set by the Honorable Prime Minister for this Amrit Kal of 25 years period. So by 25 years time, IMD will be celebrating complete 200 years of its existence. So by that time, I'm sure this building will remain, but the activities will change. New people will come, take over the mantle of the challenges and lead our country towards a new direction. I'm also proud to see some of the achievements which we have made. As the long history has been already narrated and we all know, but in last 9.5 years, tremendous achievements we have witnessed in our ministry. And some of the things which we are going to do also, very interesting, like launch of Panchayat level weather services. Now, when we hear about Mausam Vigyan, everybody knows Mausam Vigyan. People may not know about the Ministry of Earth Sciences because it is comparatively a new ministry, but Mausam Vigyan, everybody knows Mausam Vigyan. So, how to connect our ministry, the IMD and its services with the common people has to be our priority. Now, our services to the farmers, to the fishermen, to everybody is so relevant. It is not daily or it's not something which we have to tell. It is in fact every moment. हर समय आजकल तो हम देखते हैं कि वो वेदर फोरकास्ट के लिए तुरंत सब लोग देखता है अभी टेम्परेचर क्या है, कल बारिश होने वाला है कि नहीं. When we will acquire the high power computer, we will start generating long-term forecast. So these are going to be so handy. और सब लोग देखने वाले हैं. मैं तो अभी मीटिंग वगैरह में, पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ तो बताते हैं कि आप लोग को जो सर्विस दे रहे हैं गूगल के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन सर्विस तो हमारा मिनिस्ट्री दे रहे हैं. आपको टेम्परेचर बताते हैं, ह्यूमिड लेवल बताते हैं, आपको प्रेशर लेवल बताते हैं और मौसम के बारे में. तो नाउ पीपल आर गोइंग टू live their life fully integrating with the studies done by the IMD people. तो अब पूरा दुनिया एकजुट हो गया है. जब क्लाइमेट का बात करते हैं तो दुनिया एकजुट है, क्योंकि प्राइवेट एक आदमी को कोई इसका मतलब नहीं, ये पूरा दुनिया का इशू है. इसलिए जब भी हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं सबका व्यू पॉइंट लगभग बराबर है. In recent the conference I attended in Paris, One Planet Polar Summit, that was very interesting. How to prevent the ice melt in the Arctic and Antarctic and the third poles. तो मैंने सोचा है कि हम लोग शायद इंडिया में रह करके भी हिमालयन रीजन में ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में तो हम लोग चर्चा करते हुए कई सालों से सुना है, लेकिन कितना हमने एक्चुअल स्टडी किया है, कितना डीप, इंच, ये तो एक इंच का बात है. अगर 1 इंच ग्लेशियर मेल्टिंग का अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. मेजरमेंट के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. जैसे हम आर्कटिक में, अंटार्कटिक में हम जो देखते हैं कि वहाँ एक स्पेशीज गायब होता है, तो इसका मतलब कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, कितना चेंजेस, कितना बड़ा इम्पैक्टफुल है. तो इसलिए 1 इंच आइस मेल्ट होना या 0.1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उठना, उसका प्रभाव कितना है. तो हमको ऐसा लगा कि इंडिया जैसे बहुत ही पॉपुलस कंट्री में हम लोग इतना बिजी रहता है, आम लोगों के ज़िंदगी में इतना चैलेंजेस है कि वो इतना कंसर्न नहीं करते. जानता है वो आइस मेल्टिंग खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत डेंजरस है, ये जानते हैं. ऐसा नहीं कोई नहीं जानते, सब जानते हैं.
लेकिन इमीडिएटली अर्जेंटली कितने लोग फील करते हैं कि मेरा काम, मेरा एक्शन से क्या प्रभाव आने वाला है इन्वायरमेंट की दृष्टि से, पोल्यूशन की दृष्टि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से। हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है। कम्युनिटी वाइज जो बड़ा देश दिखता है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है, इंडिविजुअल कम लगता है। लेकिन जब सब सोचेंगे कि इसका प्रभाव क्या है, एक्चुअल में जानेंगे, तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और ज़्यादा सीरियस होगा। और फिर ये जो क्लाइमेट स्टडीज़ करता है साइंटिस्ट लोगों के प्रति भी सम्मान भी बढ़ेगा। इसलिए मैंने जो देखा है कि मैं खुद जब मैं आर्कटिक रीजन में गए तब मेरा सोच में थोड़ा सा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा, मुझे भी मालूम था ये क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, सीरियस है, लेकिन बहुत ही गंभीरता से सोचने का मजबूर तभी हुआ जब आप बहुत करीब से चीज को देखा है। अदरवाइज लोग सोचते हैं कि अरे मेरा अकेला से क्या होगा दुनिया में, मैं अकेला अगर ऐसे बिहेव कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। सब लोग ये सोचेंगे तो फिर कैसे सुधारेंगे। तो मैंने बहुत करीब से वहाँ जब आर्कटिक में देखा कि सचमुच में दुनिया तो बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। 40 साल पहले जो पूरा आइस था, 40 साल के बाद में एक टुकड़ा आइस नहीं है। अब ये फर्क हम इंडिया में बैठ करके नहीं देख पाते हैं। जो लद्दाख में हिमालयन रीजन का जो ग्लेशियर के बिल्कुल पास में रहते हैं उसको दिखाई देगा, मगर आमतौर पर दिल्ली शहर में जो बैठते हैं उसको इतना फर्क मालूम है कि गर्मी बढ़ रहा है, लेकिन उसको इमीडिएटली वो पता नहीं चलता कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जो आने वाला दिनों में हमारा जितने भी क्लाइमेट स्टडीज और इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हर दृष्टि से आजकल हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट भी होना पड़ेगा, क्लाइमेट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। ये तो हमारा सोच में बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। तब हर काम करने के पीछे में आपका एक भाव रहेगा, एक सेंस रहेगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे दुनिया को तबाही की तरह नहीं ले जाएगा। तो इसलिए आज ये सिंपल एक लोगो लॉन्च नहीं है, बल्कि एक बड़ा जर्नी का सेलिब्रेशन है। और इस लोगो अनवेलिंग के समय में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ये डिज़ाइन किया, फिर हम लोग सब बैठ करके इसका तस्वीर देखा तो मुझे लगा कि एक मैसेजिंग की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब भारत जो है एक लीडर बन चुका है, ग्लोबल लीडर बन चुका है। आप सबको मालूम है अभी जो COP28 मीटिंग हुआ दुबई में, तो जो इनॉग्रल सेशन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तरफ से सिर्फ एक प्रधानमंत्री को बुलाया गया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उसको वहाँ इनॉग्रल एड्रेस के लिए मौका दिया गया। ये मतलब इसलिए कि भारत का लीडरशिप और भारत का महत्व, भारत का योगदान ये दुनिया पहचान गई है। और मैं जितना भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखा, जो लेटेस्ट अभी पेरिस वाला में भी सबने कहा है कि इंडिया और चाइना जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगा तो दुनिया सुधर नहीं सकता है। तो भारत को लीडरशिप का रोल देना है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिल्कुल ग्लोबल लीडरशिप का रोल दिया है। उन्होंने जो लाइफ लॉन्च किया है, जो हम लोग को जीने का कैसा तरीका होना चाहिए, उसको लगभग सभी देशों ने उसका स्वागत किया है। और धीरे धीरे सब मालूम हो गया कि इंडिया का जितना पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाया है ये दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं। ये सब ने इसको माना है। तो आज के दिन में जब हम लोग ये लोगो अनवेल कर रहे हैं तो कुछ मन में भी हम लोग ठान लेने से ठीक है, अपने आप हम लोग का जो भारत देश के लिए हमारा मिनिस्ट्री की ओर से, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से
और क्या क्या कर सकते हैं, और आम लोगों को जितना जोड़ सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आजकल कोशिशें यही रहना चाहिए कि हमारा जो काम है आम जिंदगी में इसका फ़र्क क्या पड़ने वाला है। So it is all relevancy. That is why I keep telling our officers that people should know how we are serving the society. Many people are benefiting from all the success stories which we have seen, but many people also at the same time do not connect because they are not aware of our achievement. अब हमारे कोई सागर में जा कर के 2000-3000 किलोमीटर इंडियन ओशन में जाके कुछ काम करता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता इसका। या हमारा इंस्टीट्यूट में अंदर में बैठ कर कितना रिसर्च का काम करते हैं लोगों को पता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को खास करके जोड़ने का कार्यक्रम, ये मुझे अच्छा लगा और कई फोटोग्राफ्स वगैरह खींचे हैं। अभी हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट वगैरह जो जिक्र किया है कि आम लोग खास करके जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं हमारे सेंटर में आए, हमारे NCSS का सेंटर में आए, हमारे NIOT में, हमारे NCPR में, IITM में और यहाँ मिनिस्ट्री में भी आकर के इंटरेक्शन करना चाहिए। और जितना जो डेवलप कंट्रीज में मैंने देखा है साइंस के क्षेत्र में बच्चों का रुझान कैसे बढ़ाया जाए ये प्राथमिकता रहता ही है। एनी नेशन who dreams to become prosperous has to give top priority to the science. और बच्चों को जितना हम साइंस में मोड़ सकते हैं उतना ही हमारा फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम को और थोड़ा सा बल देते हुए हम लोग को आगे काम करना है। और ये जो आने वाला साल भर का कार्यक्रम जो 15 जनवरी को लॉन्च करेंगे उसमें मैं चाहूँगा कई कार्यक्रम ऐसे हो जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के साथ हम मिल करके चलाना चाहिए। और जो हमारे जो फील्ड ऑफिसेस है उनके साथ में मिल करके सेमिनार या वर्कशॉप किसी भी तरह का कार्यक्रम हम लोग को इनोवेटिव तरीके से सोच के करना चाहिए। तो ये हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मुख्य बिंदु रहेगा। बाकी जो कोर स्टडीज़ है, हमारा जो अचीवमेंट है वो तो बरकरार रहेंगे। और जितना जो अचीवमेंट्स हम लोगों ने किए हैं और ख़ास करके जो हमने पार्लियामेंट में भी जवाब दिए हैं कई जो हमारे अचीवमेंट्स को लेकर के, तो मुझे लगता है कि आने वाला 2-3 सालों में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको हम लोग प्रोत्साहन करना होगा। क्योंकि जैसे डॉपलर राडार वेदर जो रीड करने के लिए हम लोग को बनाना है, इसको और तेज़ी लाना है, जितना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करें, हमारे पास पूरा कैपेसिटी है, हमारा साइंटिस्ट, हमारा सब सारे जो रिक्वायरमेंट है वो यही मेड इन इंडिया ही कर सकते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स को भी हम लोग को एंगेज करना होगा ताकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है इंडिया बने। हम अपना ज़रूरत अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जितना हमको चाहिए, पैसा है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी पूरी तरह से हमारा ज़रूरत को समय पे हमारा जितना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बल्कि दुनिया को सप्लाई करना चाहिए, हमारे पास इतना मैन पावर है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, दुनिया का कई हाईटेक इंडस्ट्रीज का सेंटर इंडिया में लग रहे हैं। और जो हम लोग का PLI स्कीम्स है जितना भी, तो PLI स्कीम्स के माध्यम से कई सेंटर्स हमारे यहाँ खड़ा हो गया है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग हमारे जो काम है उसको बहुत बल देना होगा। तो मैं तो चाहता हूँ हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे जितना सीनियर ऑफिसर्स टाइम लगा करके बिल्कुल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टि से कि हर इक्विपमेंट भारत में बनाया जाए। तो इससे IMD ने बाकी हमारे जितना भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, हमारा जियो साइंस का अभी जो NCS का भी हम लोगों ने अरुणाचल में जा कर के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का जो यूनिट वहाँ एक तो बिठाया है। उसी प्रकार से जितने भी हमारा सागर के दुनिया में हो या
वायुमंडल की दुनिया में हो, हर चीज़ को हम लोग इंडिया में कैसे केंद्रित कराया जाए, इसको बल देना होगा। अगर हम लोग तो एग्रेसिवली नहीं करेंगे तो फिर हमारे पड़ोसी देश कई लोग हैं, वो लोग भी एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। तो हम लोग इस क्षेत्र में बहुत ज़ोर से लगना होगा। बाकी चीज़ों के बारे में आप लोग को सबको मालूम है, तो मैं डॉक्टर महापात्रा जी और पूरे टीम को बधाई देता हूं कि हमारा 150 साल का जर्नी अभी शुरू होने वाले हैं। 15 जनवरी के बाद फुल ऑफ एक्टिविटीज़, आईएमडी छा जाना चाहिए हर जगह में। तो आईएमडी का तो जैसे मैंने कहा है सबको मालूम है, बाकी विभाग बाकी चीज़ें सेंटर के बारे में लोग अभी जान रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग पहले दूरदर्शन का ज़माने में भी लास्ट का जो 4 मिनट है वो तो मौसम न्यूज़ होते हैं, तो मौसम विभाग का तो सब जानते हैं। तो इसको और हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह जो होगा, ये जो 158 ईयर सेलिब्रेशन के दौरान, उसमें ये बड़ा हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इस्टेब्लिश आवर लीडरशिप। तो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है। फिर से मैं पूरे टीम को बधाई देता हूं, और ख़ास करके जो लोगो क्रिएशन में जितने टीम लगे हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. We, the MOES and the IMD family, are grateful to you for your inspirational words, encouragement, and guidance from time to time in improvement of weather and climate services to the nation and to the world. We also thank you for highlighting the importance of weather and climate services in day-to-day life. As advised by Honorable Sir, it is the beginning of a journey. All of us have to contribute to develop resilience to climate change, and contribute towards developing Atmanirbhar Bharat. Union Minister. Media friends who are present here in person are requested to put up their questions or suggestions. You can raise your hand one by one. If there is any question, you can ask. Jay Online Srinath from participants? Hindustan Times. I wanted to ask for extreme weather events like extremely heavy rainfall, where, for example, the Tamil Nadu rainfall this time. What are we doing for those kind of events so that we can, sort of forecast them more accurately? Anything planned for the coming? Hello. This is a very relevant question, and as our secretary also mentioned, so both our secretary and DG can substantiate from a scientific point of view. What I want to tell is a decade and some years before, any cyclone, any severe weather condition used to bring lots of disasters, like super cyclone. Thousands and thousands of people died. So when our forecasting system improved, we have adequate time for preparation, for evacuation, for all safety measures. So now, series of cyclones and other events we have witnessed. So we are seeing
in terms of life, there is no life casualty. But there are still damages to properties and other resources. But at the same time, there are some incidents which brought some disasters, like the glacial lake burst in Sikkim and the cloud burst which happened in Himachal. So we saw huge damage and losing of lives at many times. So cloud burst is a thing which we are striving very hard, that we should be able to predict cloud bursts. As such, in the world today, there is no technology to predict a cloud burst because it's happening in a small region with a sudden accumulation of the water particles and bringing the downpour. So this is a major challenge. But we are looking for some mechanism where we can install lots of observatory system there. So everything depends on the observation and then modeling and then forecasting. So we are enhancing our capacities to observe all these patterns. Regarding the Tamil Nadu, we are very well aware of the situation, and normally in the month of December, Tamil Nadu receives the rainfall. But to prevent, there's nothing called prevent, it is only the system to study and to remain alert. But in a lighter side, or maybe it won't be lighter after a few years, we can really manage weather, because Secretary and I was discussing that day, and I want to publish an article in one of the newspaper. I did not start yet. This weather management, the technology has come to this stage where we can, to some extent, manage the weather. Means not destroying the weather. Like, for example, aerosol injection and artificial rain. It's also a weather management in a way. So these are very interesting things. I mean, in seminars and workshops, the scientists and expert people can have a very lengthy discussion on this. But that is my thought, that this kind of sudden weather pattern which are causing lot of damages, these are the focus areas where our people are giving lots of interest and doing the study. But on this Tamil Nadu rain pattern, I can ask Secretary to just put some highlights. Yeah, just for your pointed question about how this type of weather can be forecasted well in advance. See, basically we have now maybe a 12-kilometer course resolution. How we can improve the weather? Mainly, we need more and more observations, and also we need to have better understanding about the present weather pattern changes. And also we need to have a very high resolution model to run. For that, more HPC is required, high performance computing. And we have to disseminate what. So now in all the area, not only observation, but also understanding. So now this year we will be installing high performance computing system, very high end of system. I think that will go for very high resolution. In, maybe instead of 12 kilometer, we can go for 6 kilometer. So that will be the one of the world highest resolution we are running as of now. So it is on par with every country. It is not that our forecast or our model or any other observation is inferior to anybody. But however, this is since we are in a tropical, see this sudden way of forming the weather pattern, it is much more dynamic than other places. So we need to put more effort than when compared to extratropics and polar regions. So we are working on all the three directions: more observations, more understanding, as well as more HPC for running the very high resolution models. So for Tamil Nadu case, of course, whatever they have forecasted, they have told very high rainfall region. So beyond that extreme, because we cannot say 5 days advance, this is what will happen. So it is an evolving process. Every day it is people are telling that this one. Of course, the 90 centimeter rainfall
nobody expected and no model could do it. It is not only Indian model we are looking at it. We have looked at maybe a suite of models from European, US, India, Japan, and all other models. No model could capture this type of process. So this is because of nearby sea and sudden development and all. This will not happen. This is only possible during Navkas or 24 hours before. But we are putting more effort and doing such effort in the future, how we can overcome that. We are working at in all three directions. Sir, you talked about artificial rain, and IITM has been doing research on cloud seedling and artificial rain for a long time. When do we expect India to first test this artificial rain in how many years? Because if you look at India's monsoon rainfall, even if we receive normal or above normal rainfall, there will be some regions, some pockets where there will be drought or below normal rainfall, which needs rains for agriculture. So first thing this, and second part is about this monsoon mission. So when do you expect that India will be able to correctly forecast the long range forecast when it is announced in April? So first one is regarding artificial rain. Of course, you mentioned about the IITM experiment. It is a KIPEX experiment. So recently they have come out with a very good report. It is available now last month only. It is published in Bulletin of American Meteorological Society. What is the impact? How much we can do in different regions? Of course, we need to bring out the policy because it is not the artificial rain means somebody's gain, somebody's loss. So, and in terms of space and time. So we have to think about all this policy as well as in what is the further things we have to do. So whether we need to do or how much we have to do, where we have to do, this all we have to work out. But we got how much percentage of impact or how much percentage it can provide the solution, which we have worked out. So definitely we are looking at it, what we can do. That's what we are telling in next 5 years, we will go for weather modification. Even we are, finally we are aiming up weather management. And coming to the next question regarding monsoon mission, it is not that next 5 years I will complete it. If I finish my monsoon forecast by next 5 years or next 10 years, that is the end of meteorology. It is impossible. Can you tell your body all the disease, what is happening? You will be able to tell. It is like that. We are a doctor for the Mother Earth. It is like a health. So it is a lot of complexities involved. So we are going, understanding little bit and try to implement in the services. So now we are going for maybe 70% forecast. So we will improve by 80%, then 85, then afterwards it will be improving 0.1%. So it will be like that. It is an evolving process. It is not like a digital. Maybe next 10 years, I will be able to forecast seasonal prediction monsoon very well. Like that we cannot. So it is a progress. So that's why Monsoon Mission 1 we brought from very quantum. That means a paradigm shift we have brought into Monsoon Mission 1 from statistical forecast to dynamical forecast. So now we are year by year, we are trying to improve. So that's why every year it will be improving, not only for monsoon, but also in the short term also. So that's the main thing. Yeah. Yeah, I just want to add a few words what Secretary has told with respect to monsoon mission. So there has been different phases of monsoon mission. Monsoon mission phase 1, phase 2, phase 3. Phase 3 is in progress. And accordingly, you can see the output of the monsoon mission. It has been brought out how it has resulted in development of the numerical modeling system for different timescales. For example, short to medium range modeling, then extended range forecast modeling, then seasonal forecast modeling. Just like our Honorable Minister told, if you just look at beyond say 10 years in the past, there was no extended range forecasting, that is monsoon forecast for next 4 weeks. If you look at that, there was only one value which is given, say it will be 96% of the long period average. This was the forecast
since 2021, we are providing forecast for the entire country. So that is the output of the monsoon mission and various initiatives taken, where we are able to provide long-range forecast for the different parts of the country instead of telling simply what will be the average rainfall for the country as a whole, which is not so much useful for the farmers or the planners and policymakers. So like that, earlier there was no such forecast for individual months. Now you have got forecast monthly. Every month end, I used to come to media and brief what is the forecast for next month. So all these developments in the seasonal scale has been possible because of the monsoon mission. And again, the ongoing third phase, as Secretary Saab told, will approach the various research community who are working together to address the complexities, and new products will come up certainly. So it has helped in better understanding. It has helped in better development of the modeling processes. And also it has helped in developing the various products which are useful for various sectors. It is addressing to the various sectors of socioeconomic development in the country. Thank you. Sir, इधर. Sir, Is cloud seeding is a kind of destruction in natural phenomenon? Yeah, that's what I was telling. Yeah. So we have to see the pros and cons. In fact. Okay. Yeah. Very blindly. Scared is somebody's loss. Yes. So that's yes. what we have to. And calculate. again, the situation, the climate, if there we can drain out somewhere moisture, we can create problem there. Yeah. So it is vice versa, I think. No, it is, that's what we have to do. There is a system available, there is a technique available. Yeah. But how to use it, where to use it, that we have to take a decision. Definitely. Okay. So suppose somewhere drought, Yeah. then you can think of making it maybe when the clouds are available, then you can make it there. Okay. Even somewhere flooding is happening, if you cloud seed, you can suppress the rain also. Oh. So that is also we can do. So that is what we have to do. What is that best we have to do, where we have to do, when we have to do that, we have to take a calculation. Definitely. Thank you, sir. सर इधर मंत्री जी जैसे न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी तो आ गया था लेकिन परीक्षण भी जरूरत पड़ा तो इस टाइप का परीक्षण कब हम देख सकते हैं? ऐसा है ये तो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और जैसे सेक्रेटरी साहब ने जैसे बताया कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बड़ा सवाल है. इसलिए मैंने जब मेंशन किया था मैंने बहुत केयरफुली बोला जब हम वेदर मैनेजमेंट बोलता है तो इट साउंड्स अननेचुरल and it sounds in a way threatening the nature. We should not play around with the nature. But at the critical time for our survival, for the safety of the humanity, if it is required, like making tunnel, long tunnel for power generation, for communication, transportation, making channels, and also there has been so many things you can see where you have in a way played with the nature, but climate, the weather system is so sensitive that if you want to block the flow of monsoon from here, it might cause desertification somewhere else. So that is why what Secretary said is correct. We have to really think in terms of morality also, from the point of view, if we say that if my action is going to cause harm to somebody, then how can you justify it? So it's a very sensitive matter and policy matter also. सर पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के सर कई झटके महसूस हुए. आज भी हुआ. बिल्कुल. तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसे लेकर भी सर कोई स्टडी हो रही है क्या, या इसे लेकर पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इसके पीछे क्या वजह है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये देखिए अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में मैं जो देखा हूँ सबसे कठिन और सबसे कम जानकारी ये भूविज्ञान में है, जियोलॉजी में, जो अर्थ का अंदर का एटमॉस्फेयर में 1000 किलोमीटर तक भी आप रॉकेट भेजते हैं, स्टडी करते हैं क्योंकि खुला है, तो इजी है. मतलब इजी मीन्स कंपैरेटिवली पृथ्वी के अंदर जाना तो बहुत कठिन है. तो अभी हम जब हम कराड में गए थे, हमारे वहाँ जो सेंटर है उसमें देखने के गए थे, तो अभी 3 किलोमीटर तक हम नीचे जा पाए. अभी तक लक्ष्य है 6 किलोमीटर तक जाने का. तो बहुत कम कंट्री है, 2-4 कंट्री है जो इतना डीप बोरहोल करके जाते हैं.
तो वहां जो स्टडी कर रहा है, तो वो भी मैंने जो देखा साइंटिस्ट लोगों से बातचीत करके, जानकारी बहुत कम है, बहुत कम है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये चाहते हैं कि अर्थक्वेक प्रिडिक्शन कोई तो कर नहीं पा रहा है। जापान में बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगाने के बाद कुछ झटके के बारे में वो लोग कुछ सेकंड पहले बताते हैं कि होने वाला है, पॉसिबिलिटी ये है, कोई डेफिनेट नहीं है। अल्टीमेटली अगर भूकंप के बारे में आधा मिनट भी पहले अगर बता सकते हैं कि भूकंप आने वाले हैं, तो तबाही से लोग बच सकते हैं। बट ये इतना चैलेंजिंग है। लेकिन ये जो हमारा सिस्मोलॉजिक रिसर्च और एक्टिविटीज है, इनकरेजिंग है। बट जैसे मैंने कहा, बहुत कम नॉलेज इस वक्त। मैं भी तो मिनिस्ट्री में आने के बाद काफी इसका बारे में चर्चा किया और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा सिस्मिक सेंटर देश भर में बिछाया हुआ है, तो तुरंत अभी पता चल जाता है, एक्यूरेट बताते हैं कि क्या हुआ। लेकिन होने से पहले वाला जो हमारा टेक्नोलॉजी है, फोरकास्टिंग, ये भूकंप फोरकास्टिंग, काश जैसे हम मौसम फोरकास्ट करते हैं, अगर ऐसा भूकंप हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा मानवता के लिए ये उपलब्धि रहेगा। किरण सर, थैंक यू। क्लाउड बर्स्ट के बारे में जो मैं इधर सर, अच्छा, क्लाउड बर्स्ट के बारे में जो आपने पहले बताया, उसको हिंदी में थोड़ा बता दीजिए, हमारे चलाने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। नहीं, क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम तो काफी साल से देख रहे हैं। जब मैं MOS होम था तो डिजास्टर मैनेजमेंट देखते थे, तो डॉक्टर महापात्रा वहां आके ब्रीफ करते थे होम मिनिस्ट्री में। तब भी हमने कहा कि क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्टिंग का क्या उपाय है। तब से लेकर अब तक काफी हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जो सडनली कंसेंट्रेटेड एक वैली में इतना बड़ा वहां पे क्लाउड और पानी जमा करके एक साथ गिर जाना, कि 3 महीने का बारिश 5 मिनट में गिर जाएगा, तो वो तबाही लाता है। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन, हमने यही उपाय सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा ऑब्जर्वेशन टावर वहां बिछाया जाए, ताकि हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन वहां जो क्या डेवलपमेंट होना है, क्योंकि ये अचानक होते हैं, इसलिए तो फोरकास्ट नहीं हो पाते हैं। जो नॉर्मल मॉनसून पैटर्न है उसका तो फोरकास्ट हो जाता है, लेकिन जो अचानक वैली का अंदर में 5-6 किलोमीटर का वर्ग में अगर कुछ चीज फॉर्म होता है, तो वो बहुत कठिन है। लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश किया, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी अभी रिसेंटली हम लोग मिनिस्ट्री बैठक में भी ये कहा कि हम लोग जैसे कुछ वैलीज है, जैसे रवि वैली है, व्यास वैली है, या हमारा वो सिक्किम का तीस्ता वैली है, अरुणाचल में 5 बड़ा वैली है। इसी प्रकार के जो वैली वाइज अगर हम कंसेंट्रेट करेंगे तो तबाही रोक सकते हैं। क्योंकि खुला मैदान में अगर बारिश भी हो जाए तो भी प्रभाव उसका स्प्रेड होता है, लेकिन वैली में जो कंसेंट्रेटेड है, वो नाला पूरा उखाड़ के सारा ब्रिज, आदमी, घर, जान खत्म कर देते हैं। इसलिए हमारे लिए क्लाउड बर्स्ट एक फोकस एरिया है। आई एम श्योर कि अगले 1-2 साल के बाद हम सारा इक्विपमेंट्स, अगर हम पूरा जो मैंने इक्विपमेंट का जिक्र किया, इक्विपमेंट जो हमारा राडार, डॉपलर राडार लगाने का है, ये वगैरह, अगर ये हम एक्सटेंसिवली देश भर में बिछाया सकेगा, तो फिर फोरकास्टिंग का हमारा एबिलिटी भी बढ़ जाएगा। दूसरा, आर्टिफिशियल रेन के बारे में भी हिंदी में थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हम लोग को चला। आर्टिफिशियल रेन, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा सेक्रेटरी साहब हिंदी नहीं बोल पाता है, डॉक्टर महापात्रा भी ब्रोकन हिंदी बोलते हैं, ये उड़िया है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये देखिए, आर्टिफिशियल रेनफॉल का जैसे हमने बात किया, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। हम अगर ये कहेंगे कि जब चाहे हम बारिश कर देंगे, तो ऐसा बोलना, क्लेम करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि दुनिया में एटमॉस्फेयर तो कॉमन है, कहीं से पानी कहीं लिया तो कहीं सूखा होगा, ये पानी को डाइवर्ट कर दिया तो इधर सूखा होगा, पानी उधर जाएगा। रिसोर्सेस कॉमन है, कॉमन रिसोर्सेस पे ही हम मैनेजमेंट करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल पॉकेट वाइज, जैसे कि दिल्ली में 26 जनवरी होने वाले हैं और बारिश को रोकना है, तो उसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके एडवांस में बारिश गिरा दे, या उस जगह से पानी का मात्रा को कम कर दे, कुछ करके ये होता है। ये जगह जगह डेवलप कंट्रीज में भी काफी यूज हुए हैं। लेकिन पूरा हम लोग का जीवन शैली को चेंज करने के लिए वेदर पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न को ही चेंज करेंगे, ये क्लेम करना भी बड़ा रिस्की है। और ये सब बातें
इन्वायरमेंट दृष्टि से भी बहुत ही एक्सटेंसिवली सोचना और कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरत पर इस्तेमाल करना होगा मानवता के लिए। जैसे मैंने कहा कि फॉर ह्यूमैनिटी साइंस को यूज करना होगा तो यूज करना चाहिए, लेकिन उससे अगर नुकसान होगा तो फिर हमको बचना चाहिए। आपका हो गया ना? सर एक और प्लीज, वो उसी से रिलेटेड है कि सडन जो हैवी रेन या सडन एटमॉस्फेयर चेंजेस जो हो रहे हैं, सडन रेन हैवी रेन हो रहा है, तो क्या हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है उसको रीडिजाइन करने या रीथिंक करने की जरूरत है, या उस दिशा में भी कोई कोशिश हो रही है? जैसे बड़े बड़े डैम है, अचानक बारिश हुई एक्सटेंसिव बारिश तो वो टूट सकता है या बढ़ सकता है। ऐसा है, देखिए एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ, ये तो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग वेदर रीडिंग स्टडीज तक है, और मैनेजमेंट करना फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या करना फिर वो अलग मंत्रालय में है, फिर उसका आपदा प्रबंधन, फिर वो डिजास्टर मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है। तो उतना हम डिटेल में हम मालूम है क्या क्या है चीज, लेकिन उतना डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा है, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ जाता है तो नेचुरली वो एनकाउंटर करते हैं नेचुरल फेनोमेना के साथ। तो मैं कई जगह एग्जांपल दिया हूं, जैसे कि पहाड़ है, नाला है, वो हर साल वहां बाढ़ आता है, उसको हम बाढ़ नहीं मानते हैं या हम उसको डिजास्टर नहीं मानते हैं। डिजास्टर तब मानते हैं जब हमने वहां ब्रिज बनाया और ब्रिज ले गया, या वहां लोग बसने लग गए और घर ले गया, जान चले गए, तब डिजास्टर मानते हैं। ये जो गतिविधि है तो सदियों से चलते आ रहे हैं। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज अपना दायरा से बाहर जाकर के जगह जगह हो जाता है तो वो नेचुरल तरीके से उसका जब इफेक्ट होता है तो उसको हम डिजास्टर के रूप में देखते हैं। इसलिए डिजास्टर रेजिलिएंट का जो मैंने बात किया ना, दुनिया में आपको मालूम है ह्यूगो फ्रेमवर्क के मुताबिक 2030 तक every policy program and all the infrastructure built will have to be resistant to the disaster. तो disaster resilient होना है। ये disaster proof तो हो नहीं सकता है, it can be disaster resilient। तो वो दृष्टि से ये सारा देश सारा दुनिया आजकल प्रोग्राम पॉलिसीज में डिजास्टर को लेकर के सब रखते हैं। जो सागर के ऊपर ब्रिज बनाते हैं, वो भी टाइफून आते हैं, हरिकेन आते हैं, तो उसको रेजिस्टेंट करने के लिए कैपेसिटी के हिसाब से बनाते हैं। डैम बनाते हैं जो आपने पूछा है, वो कितना रिक्टर स्केल अर्थक्वेक का वो रेजिस्ट कर सकेंगे। अगर 9 रिक्टर स्केल में आ गया तो पृथ्वी ही टूट फूट जाएगा, तो फिर ब्रिज क्या होता है? तो कैपेसिटी होता है लिमिट, विद इन लिमिट में ही। Thank you, sir. We have a question from online participant, Mr. Piyush Srivastava, IIT Roorkee. You can ask your question. You can put your question in the chat box. Or you can speak. You unmute yourself. You can ask your question. Mr. Piyush. No other questions, sir. मेरा ख्याल से हो गया। ओके, कार्यक्रम के अंत में मैं श्रीमती रंजू मदान, उप महानिदेशक प्रशासन को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। At the concluding part of this momentous event on release of the logo of IMD to mark the start of celebrations of 150 years of services to the nation, I would like to thank Honorable Minister of Earth Sciences, Shri Kiren Rijiju ji, for sparing time from his busy schedule and gracing this occasion to make it a memorable event for all of us. Sir, आपने अपने संबोधन में हमें बहुत से पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम उन पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे,
क्योंकि जर्नी अभी आगे कंटिन्यूड है। My sincere thanks to Dr. Ravichandran ji, Secretary MOES, for gracing this occasion. He has always been a pillar of support and guiding light for IMD. Thank you, sir. On behalf of IMD, I thank Shri Senthil Pandian ji, Joint Secretary, Ministry of Earth Sciences, for sparing time to be with us on this occasion and for his constant support and guidance in all the activities of IMD. Thanks to DG IMD for his untiring efforts and for all the guidance he provides for making all activities of IMD a success. I would also like to thank all my colleagues in IMD, officials of MOES and other sister organizations who have contributed directly or indirectly in planning and execution of this event. My special thanks are to the members of the local organizing committee headed by Vivek Sinha ji for their selfless efforts put in for the success of this event. Last but not the least, I thank our friends from media, without whom this event cannot be complete. Thank you all who have joined us today physically or through online mode. Thank you all. धन्यवाद मैडम। प्रिय प्रतिनिधियों, मीटिंग हॉल के पीछे आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया जलपान के लिए आगे बढ़ें। हम अपनी सक्रिय भागीदारी से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।